right? Okay, so if you talk about group number 7, group number 7 is actually halogens. Group number 7 is actually halogens, right? Group 7 is actually what? Halogens. और we know that हमारे पास इसमें है fluorine, chlorine, bromine, iodine, and acetylene. If you talk about their physical properties, बच्चों, so they are actually very reactive non-metals, right? And the reactivity is actually not a physical property. That is why I'm not writing over here. So you can say that they are अगर हम इसको लिखें इस तरह, they are like fluorine and chlorine are gases, right? Bromine is liquid at room temperature and pressure, and iodine is solid, right? This is one thing you need to remember. Then they have low melting and boiling point. They have low melting and boiling point, right? And you can say that they are diatomic. You need to keep remember they are always in diatomic form. Yeah, in like fluorine आपके पास F2 होगा, chlorine Cl2 होगा, bromine Br2 होगा, iodine और acetylene इस तरह होगा, ठीक है ना? तो they are always in diatomic form, ठीक है ना? और ये बनते हैं कैसे? ये बनते हैं जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. हैलोजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? और दोनों ही हैलोजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. Then they will form a single bond over there, and it will be like this. तो सारे ही हैलोजन इस तरह के होते हैं. They always form a covalent molecule. जब ये covalent molecule बनाते हैं, they are insoluble in water and they are insulator of electricity. So you can say that they are insoluble and insulator. They are insoluble in water and they are insulators. Right, so these are the physical properties of group 7 non-metals. They are highly reactive non-metals. You can say that because they have 7 electrons, so they can readily receive electrons. So they are non-metals, and you can say that highly reactive non-metals. They are more reactive than group 6 and group 5. Same as it is as group 1. If you talk about group 1, so they are highly reactive metals. So they are more reactive than group 2 and group 3 because they have only 1 electron. So they are just going to sacrifice 1 electron. So that's very easy for them to donate. That is why they are highly reactive, and they are what? They are highly reactive non-metals because they just need 1 electron, so they can easily gain that electron. That is why they are highly reactive. Then, if you talk about trends, so trends are something like followings. So what they are going to follow, just look at over here. If you talk about fluorine, chlorine, bromine, iodine, and if you want to write acetylene, so you can. So it is gaseous, it is liquid, it is solid, right? And if you talk about the colors, so it is yellowish gas, it is yellowish green gas, or you can say that greenish yellow gas, yellowish green gas. This is reddish brown liquid. In the liquid form, it is reddish brown, right? Reddish brown liquid. And this is purplish black solid. In the solid state, it is purplish black, right? And it should be black solid, right? So you can see this, bacho, that the few things are over here in trends. You can see this, that the first thing is when you're going downward, the state is changing. The state changes. The state changes from gaseous to liquid to solid, right? States are changing over here, right? From down to the group, because we are talking about group, so it is down the group, right? So all the trends are down the group. Then if you talk about their colors, so you can say that color become darker. If you see the color, so it is actually becoming darker down the group. And if you talk about melting point and boiling point, you can see this there down the group, the state solid is coming, so definitely melting boiling point is going to be higher. So you can say that boiling point, melting point, density, these all are going to be
increases down the group. They are going to be increases down the group. And if you talk about one more thing, which is reactivity, so reactivity decreases. You need to keep remember, reactivity decreases down the group. So these are the things that you need to keep remember. आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप 1 जो था, ग्रुप 1 जो था आपके पास वो क्या था, ग्रुप 1 जो था आपके पास उसमें डाउन द ग्रुप आपके पास रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, आपके पास डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वहां क्या हो रही थी, इंक्रीज, यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये डिफरेंस अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके रिएक्शंस पर। तो जब आप इनके रिएक्शंस पर आते हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शंस बच्चों, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन आप ऑलरेडी ग्रुप 1 के साथ पढ़ चुके हैं उसका, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ इसकी एक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं आप उसको। That is a substitution reaction, or you can call this as displacement as well. Right. So इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है बच्चों। वो बात आपने क्या याद रखनी है? आपने ये बात याद रखनी है कि highly reactive halogen can displace. Highly reactive halogen can displace less reactive halide. You need to keep remember, less reactive halide from its salt. This is the thing that you need to keep remember बच्चों। ठीक है ना? What I'm saying that for example आपके पास लिखा हुआ है chlorine, bromine, iodine. So they are actually halogens. They are what? Actually halogens. अगर आपके पास लिखा हुआ है for suppose KCl, KBr, KI, so they are actually salts of halides. They are actually salts of halide. So in salts में we have chlorine minus, we have bromine minus, and we have iodine minus. So they are actually halide ions, right? They are halide ions. We need to keep remember, जब वो ion की form में होंगे तो वो कहलाएंगे halides, और जब वो elemental form में होंगे तो वो कहलाएंगे halogen. ठीक है ना? So क्या इन इसमें हो तो क्या होगा, अगर ये रिएक्टर है आपके पास, अगर हाइड्रोजन है वो राइट। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मैं दोबारा आवाज नहीं सर, नहीं आ रही। अच्छा, to all of you, यस सर, आपकी आवाज लैग कर रही है। अभी भी लैग करिए। सर अभी बेहतर हुई थी। अभी बेहतर हो गई या नहीं हुई? सर अब बेहतर है। चलें, ठीक है, थैंक यू। So बच्चों, we are talking about chemical properties. So I am saying that अगर आप कोई highly reactive halogen less reactive के salt में डालोगे तो वो displace करेगा, ठीक है ना? So these are actually salts and these are actually halogens. तो salts के अंदर जो halogens होते हैं वो halide ions कहलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ion form में होते हैं। ठीक है, for example I am adding chlorine. I am adding chlorine into the salt of bromide, right? So you can see this, it is elemental form of halogen. So this is elemental form, so this is termed as halogen, and this is actually salt. This is actually salt. So over here bromide should be like bromide, like this is ionic, right? So you can say that this is halogen, so you can call this as chlorine, and if you have salt, so you can call this as bromide, right? So whenever you add or you pass the highly reactive from the less reactive, we know that down the group reactivity decreases, right? So we know that chlorine is more reactive, right? This is
more reactive and this is less reactive. So we know that bromine is less reactive than chlorine. So chlorine can easily displace bromine. Is that right, bacho, or not? Yes, sir. For the balancing, we can write 2 over here, right or not, bacho? Yes, sir. Bacho, is that right or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is actually what substitution or displacement reaction means. So you need to keep remember the highly reactive halogen can always able to displace the less reactive one from the salt. So for suppose if I have chlorine and I'm passing this chlorine from calcium iodide, right? So iodine is you can say that the less reactive than chlorine. So chlorine can displace it from the salt. वो खुद सॉल्ट बना लेगा और आयोडीन को बाहर निकाल देगा, राइट बच्चों? Yes, sir. चलें, मैं अगर आपको कुछ रिएक्शंस दूं तो कैन यू राइट दैट रिएक्शंस, राइट? फॉर एग्जांपल वी हैव few reactions. We have a skill test over here and the question is you are passing chlorine gas into sodium bromide. For suppose you are passing bromine gas into magnesium iodide. For suppose you are passing what? You are passing fluorine gas into what? Into lithium chloride. चलें इसकी इक्वेशंस मुझे जल्दी से लिखकर दिखाएं. So ionic equation का मतलब ये है कि वो आइंस या वो एटम्स आपने लिखने हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको लिखना जरूरी नहीं होता इसमें, ठीक है? अगर आप पहली वाली इक्वेशन को देखते हो, फ्लोरीन is passing through the salt of chloride and what is going to be happen in the product, you will see that the product of fluoride forms and chlorine निकल जाएगी, ठीक है ना? अब इसके अंदर अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो इस रिएक्शन में definitely fluorine is important because it is going to displace chlorine, right? And chlorine is important because it is going to be displaced and going to be out. बट इस पूरे रिएक्शन में अगर आप देखें लिथियम अपनी जगह है, लिथियम कुछ भी नहीं कर रहा. लिथियम यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 ही है. लिथियम को कोई फायदा नहीं हो रहा, ना ही कुछ ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ना ही कुछ इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है. यहाँ पर सारा काम जो है क्लोरीन और फ्लोरीन से हो रहा है. यहाँ क्लोरीन -1 था, यहाँ फ्लोराइड -1 बन गया. पहले फ्लोरीन न्यूट्रल था, अब क्लोरीन न्यूट्रल बन गया. तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुआ है वो सारा का सारा प्रोसेस हैलोजेंस पर हुआ है. लिथियम को तो वैसी का वैसी है, लिथियम को तो कुछ भी नहीं हुआ ना. तो इस रिएक्शन में लिथियम का कोई काम नहीं है. तो हम आयोनिक इक्वेशन में उस आयन को या उस एटम को हटा देते हैं जो कि यूजलेस होता है या जो कोई काम नहीं कर रहा होता इक्वेशन, ठीक है ना? The one which is not participating over here is going to be removed from the ionic equation. This is complete equation, right? And this is ionic equation. Is that right, बच्चों? Yes, sir. For example, if we talk about the second equation, जिसमें आप chlorine pass out करा रहे हो NaBr से, so this is chlorine passing through NaBr, and what is the final product? You see that it is NaCl and Br2. So again, over here, sodium is useless, so you can remove this if you are writing ionic equation. So you can even simple write over there that chlorine pass out हुआ halogen से, halogen pass out हुआ halide ion से, और उसने जो है खुद halide ion बना लिया अपने आप को और दूसरे वाले को बाहर निकाल दिया. So this will be the ionic equation, right? This is the same thing जो कि हमने start में लिखी है. हमने क्या लिखी है? हमने लिखी है when highly reactive halogen, this is what highly reactive halogen, right, can displace less reactive one, less reactive halide. This is the thing that we just wrote in the start of the lecture. कि chemical property में हमने बताया highly reactive halogen can displace the less reactive halide from the salt. So ionic equation completely shows this sentence or this statement, right बच्चों?
Yes, sir. If you talk about the third one, so over here you can see this, that bromine is passing through magnesium iodide. Now it can confuse you, but you need to be rigid to your concept. बच्चों just look at over here. अब यहाँ पर अगर आपके पास, आप कह सकते हैं सर ये ऐसा होना चाहिए इसकी आयोनिक इक्वेशन, ब्रोमीन पास आउट कराई आयोडीन में से और आपके पास ब्रोमीन बन गई और आयोडीन अलग हो गई, तो आप मुझे बताएं ये तो न्यूट्रल है ना, तो ये न्यूट्रल है तो फिर रिएक्शन तो हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो ये I2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वी हैव टू आयोडाइड आयंस, वी हैव टू आयोडाइड आयंस, बिकॉज वी नो दैट मैग्नीशियम जो है 2+ है, तो उसके लिए 2 आयोडाइड आयंस चाहिए होंगे, इसी वजह से 2 ब्रोमाइड भी चाहिए होंगे, दीज आर न्यूट्रल, राइट। So this is the ionic equation for the third equation. Is that right, बच्चों? Yes, sir. And if you want to write the state symbols over there, so you can write here bromine room temperature पे तो liquid होती है, वैसे gaseous हो सकती है, ये salt होंगे तो aqueous होंगे, जो salt होते हैं वो aqueous होते हैं, और ये आप gaseous लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर room temperature होगा तो you can write liquid and solid, right बच्चों? This will be like a gaseous, aqueous, liquid. It can be gaseous, aqueous, gaseous. Right, बच्चों? Right, everyone? Yes, sir. Sir, Yes, sir. Mg spectator ion है. जी बिल्कुल. Yes. Right, I'm not using the word spectators over here. I'm just showing you a simple thing that if the ion is going to be utilized or the atom is going to be useful in the equation, so you need to use over there. Otherwise, in ionic equation, we just need to use the one which is participating in the reaction, right? Like simple word for you, right? Yes. Sir, Okay, कल हम then periodic table वाला chapter कर रहे थे ना, आज ये कोई new chapter है. बेटा ये भी periodic table है, group 7 पढ़ लेते ना. जी. तो periodic Okay. table में ही आता है ये, ठीक है ना. Now let's move towards group number 8. बच्चों ग्रुप नंबर 8 काफी शॉर्ट कर दिया गया है आपके सिलेबस में. Halogen sir. यस, इस ये ग्रुप नंबर 8 है ना, ये नोबल गैसेस है. ग्रुप 7 था हेलोजेंस, दिस इज नोबल गैसेस, राइट. सो ग्रुप 8 काफी शॉर्ट है आपके सिलेबस में. यू कैन सी दिस हीलियम, नियॉन, Neon. आर्गन, क्रिप्टॉन, Xenon. xenon, and radon. These are the elements present in group 8. You need to remember that they have complete shells. Other than helium, they all have 8 electrons in the outermost shell. और helium का भी duplet complete है क्योंकि उसके आखिरी shell में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके होते ही 2 हैं पहले shell में. ठीक है, तो they all have complete octets and duplets, so they are very unreactive. So you can say that these gases are unreactive. If you talk about physical properties, so the number one is they all are gases. They all are gases. And if you talk about their color, so you can say that they are colorless gases. They are colorless gases. And if you talk about their reactivity, so they are inert or unreactive. They are inert and unreactive. When they are unreactive, so they are always in the individual form. They are always monoatomic. They are always monoatomic. They exist in nature as a single atom, right? They exist in nature as a single atom. Like अगर आपको नेचर में हीलियम मिलेगी, so it is always like He, अकेली मिलेगी, ठीक है ना? And if you talk about their trends, so their trends are very simple. When you are moving down the group, the induced forces are increases, intermolecular forces. So definitely boiling point, melting point, density increases, right बच्चों? Yes, I just want to ask one question from any one of you. कौन मुझे आंसर देना चाहेगा? मेरे पास यहाँ पर 15 बच्चे मौजूद हैं. अदील हैं, अदनान, आयशा, दानियाल, ईमान, ओके, इशाल हैं, हामिद हैं, किरण, महा, महवर, समीन, तथा ज़ेबुन. यस, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन बच्चों. आप में से कौन जवाब देगा? सर आप पहले क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन तो मैं नहीं. पूछूंगा डेफिनेटली, बट पहले मुझे बताएं सवाल का जवाब कौन देगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा.
ये मैं जवाब दे दूं? मैं कौन? सात। 7 जवाब देंगे। अच्छा चलें ठीक है, 7 जवाब देना चाह रहे हैं तो 7। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू रिमेंबर अबाउट ग्रुप नंबर 1, सो ग्रुप नंबर 1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, राइट? यस सर। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 7 तो उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, राइट? यस सर। व्हाट अबाउट ग्रुप नंबर 8, इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सर आई थिंक सर इनकी रिएक्टिविटी होती नहीं है, दे डू नॉट Yes, रिएक्ट। that yes. This is the thing that you I just want to ask. ये रिएक्टिव ही नहीं है तो इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड होगा नहीं। तो बच्चे सवाल पूछते सर इनकी रिएक्टिविटी डाउनवर्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो बच्चे तो रिएक्टिव ही नहीं है तो इनका ट्रेंड होगा ही नहीं। दैट्स वेरी गुड। ग्रुप नंबर 8 के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है, और अगर आप जानना चाहते हैं मजीद तो यू कैन यूज, आप इसके यूजेस जान सकते हैं। हीलियम यूज होता है वेदर बलून के तौर पे ना, इट इज यूज इन वेदर बलून्स। देखें, हीलियम लाइटर गैस नहीं है, सबसे लाइटेस्ट गैस आपके नेचर में हाइड्रोजन गैस है, बट हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव, इट कैन बी एक्सप्लोसिव इन द एयर। दैट इज व्हाई हीलियम थोड़ी सी हैवी है हाइड्रोजन से, बट वो इनर्ट है, so we use helium in the weather balloons, right? This is the reason why we are using helium in the weather balloons, because it is inert. Even it is, you can say that heavier than hydrogen, but we need to use this because it is inert, it is not going to be reactive. Hydrogen is explosive, it is highly reactive, that is why. And then neon, it used in light signboards, right? It used in signboards as a lighting purpose, right? These are the things that you need to keep remember about their uses, and this is all about group number 8 that you need to keep remember according to the new syllabus, right? It's very short, right bacho? यस सर। Then we have transition metals. Then we have transition metals that actually the part of our syllabus. Transition metals or transition elements, right? Transition elements are actually the part of periodic table which is present over there in between group 2 and group number 3, right? If you talk about group number 2 and group number 3, इनके बीच में आपके पास transition metal मौजूद हैं, right? So transition metal are like this. If you talk about transition metals, so this is the part of periodic table. Talk about periodic table, so this is a little you can say that मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पर periodic table। ये वाला जो part होता है ना बच्चों, this is actually the transition metal part, right? So these elements are belongs to transition element. Is that right बच्चों? Right? हमारे सिलेबस में जो जो चीजें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। ग्रुप 1 हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, राइट? ग्रुप 7 हमने आज की क्लास में पढ़ लिया, ग्रुप 8 हमने आज की क्लास में पढ़ लिया, एंड द रिमेनिंग वन इज ट्रांजिशन मेटल, जो कि आपको आना चाहिए। सो दीज आर ट्रांजिशन मेटल दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। We have few physical properties and chemical properties that we need to keep remember. Physical properties, right? Now you need to talk about the physical properties of transition metals. So first of all, we need to talk about typical physical properties. We need to talk about typical physical properties that are separate, that are completely different from the other metals. So if you talk about typical properties of transition metals, it is about transition metal। और आपको पता है कि आपने ग्रुप 1 भी पढ़ा है, तो हम ग्रुप 1 को भी साथ कंपेयर कर लेते हैं। So if you talk about group 1, so we know that they are soft metals. So transition metals are hard, right? They are hard metals. If you talk about their melting and boiling points, so they have low melting and boiling points, right? So they have very high melting and boiling point, right? If you talk about the densities, so they have low densities, right? And we know that the densities are actually sodium की अगर आप density की बात करें तो it is almost 0 point somewhere, it's 0.844 suppose। And if you talk about densities, so they have high densities, they have high density, right? And if you talk about iron, so for suppose it should be somewhere 7.64 like this, it is too much, right? So these are actually the specific difference of these, right?
they are typical physical properties, right? They are typical physical properties. They are their specific physical properties. And if you talk about general physical properties, so general physical properties are same for both of them. General physical properties may they have the same properties. So it will be like they both are conductors, they both are malleable, they both are ductile, they both are shiny, they both are sonorous, right? So you need to keep remember बच्चों कि ये चीज आपको याद रखनी है. ये कहाँ चले गए यार? मैंने कहाँ क्लिक कर दिया? कहाँ चले गया यार? ओके बच्चों ये मुझसे मिसप्लेस हो गया. छोड़ो नया बनाना बता जनरल क्या कह रहे बेटे? प्रॉपर्टीज बता नया बनाना छोड़े वो लिखी सर मैं कह रहा हूँ ब्लैंक क्यों कैसे बनाना वो जहाँ पे जी बिल्कुल मैं दोबारा ही बना रहा हूँ. बट वो मिस हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया. शायद स्लाइड चेंज हो गई, क्या हो गया? मेरा हाथ जो है टच हो गया था. आजकल मौसम ऐसा चल रहा है एक्चुअली. इस मौसम की वजह से जो ना हाथ के अंदर पसीने वगैरह बहुत आते हैं, तो ये मसला होता है आईपैड के साथ. क्या करूँ, हो गया तो क्या कर सकते हैं. चलें दोबारा से इसको लिख लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये बताना भी जरूरी है क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछेगा कि स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी बताएं, तो फिर आपको इश्यू हो जाएगा. तो टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने ट्रांजिशन मेटल्स को अलग रखना है, ठीक है ना. ट्रांजिशन मेटल्स को आपने अलग रखना है और ग्रुप 1 वालों को आपने अलग रखना है, ठीक है ना. सो दे आर हार्ड, they are soft, right? They can be cut by knife, but transition metal cannot. If you have iron, so you cannot cut iron by knife, right? So it has low melting, it has low melting and boiling point. Like for suppose अगर आप सर सोडियम की की आवाज बात करें, हेलो, तैयारी आवाज? यस जी सर सर. सही है अगर आप सोडियम के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट समवेयर 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो यू कैन इवन इमेजिन कि यार कितना कम मेल्टिंग पॉइंट है. और ट्रांजिशन मेटल की अगर आप बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट. उसके अंदर अगर आप एग्जांपल लें आयरन की, सो इट विल बी समवेयर द मेल्टिंग पॉइंट शुड बी मोर देन 1000. सो फॉर सपोज आई एम टेकिंग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. So you can imagine the how what is the difference between melting and boiling points over there. So which is a greater difference, right? फिर आपके पास क्या हो सकता है, डेंसिटी का डिफरेंस आ सकता है, राइट. तो यहाँ पर आपके पास हाई डेंसिटीज होती हैं और ट्रांजिशन मेटल्स की, और यहाँ पर आपके पास लो डेंसिटीज होती हैं. और अगर एग्जांपल ली जाए तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. सो सोडियम की पानी से कम होगी, so it will be somewhere like 0.4 suppose 90, राइट. और अगर आप यहाँ आयरन की डेंसिटी को सपोज करते हो बच्चों, तो इट विल बी समवेयर 7.64. सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस है. तो अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे तो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो रिएक्ट बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव. लेकिन अगर आप आयरन को पानी में डालोगे तो इट इज मॉडरेट रिएक्टिव, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी सिंक इनटू द वाटर, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, हैवियर डेंसिटी की वजह से. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these transition metals and group 1 metals. And some general physical properties that you need to keep remember. General physical properties में आपके पास conductivity आ जाती है. They both are conductors, right? They both are ductile. They can be converted into thin wires and sheets. They both are malleable. They can be changed their shape by hammering them or applying force on them. They both are sonorous. They produce a special sound when we hit them, right? And they were shiny. Right, both of them are shiny as well. So they are
physical properties that you need to keep remember, and you need to make a difference between these two, right बच्चों? Yes बच्चों, is that right? Yes, sir. And very much important thing is chemical properties. Chemical properties भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं. Chemical properties जो हैं आपके पास बच्चों, chemical properties में आपने याद रखना है. We are talking about the chemical properties of transition metals. So transition metals की chemical properties में आपने याद रखना है कि they have variable oxidation state. They have variable oxidation state. Variable oxidation state का मतलब होता है they have more than one compounds. For example, if you talk about iron, so iron can form iron 2 chloride and iron 3 chloride as well. So transition metal का नाम जब भी लिखा हुआ होगा ना पेपर में, आपको लिखना होगा तो आपको इसी तरह लिखना पड़ता है. This is iron 2 chloride. Iron 2 chloride का मतलब है that iron is +2 over here, and this is iron 3 chloride. इसका मतलब ये है कि iron is actually 3+ over here. So you need to keep remember that transition metals will always have more than one oxidation state, right? Then they can be used as a catalyst. They can be used as a catalyst. Many of the transition metals used as a catalyst in our syllabus. For suppose if you talk about iron, so it will be used in Haber process, right, for the formation of ammonia gas. We will learn this later on. If you talk about vanadium pentaoxide, it is one of the transition metal that we use in contact process for the formation of sulfuric acid, right, in the reversible reaction, right? And nickel as a catalyst in the manufacturing of margarine, right? Manufacturing of margarine, you will learn this in organic, right? And also we have one more, that rhodium and platinum that we use in catalytic converter, right? You can see this, that many of the transition metals behaving like catalysts that we need to learn in our syllabus, right? This is the second chemical property of transition metal, and we have one more chemical property named as they form colored compounds. This is very important. They form colored compounds. You need to keep remember the colors of the transition metals in salts, right? Not in the single elemental state. We are talking about salts. So for example, if you have any salts that have iron +2, it will show green color, right? If you have iron 3+, so it will show reddish brown color. I showed, and we know that हमने ये कर भी लिया है, तो आपको ये पता भी होगा कि हमने जो अभी salts की identification की थी उसमें हमने ये color याद भी किए थे, देखे भी थे. So these are actually what you need to understand कि transition metal हमेशा color compound देते हैं. Is that right बच्चों? Yes, sir. And if you talk about group number 1 बच्चों, तो group number 1 के अंदर जो आपने किया था उसमें आपने किया था reaction with water. आपने पानी के साथ reaction किया था, reaction with They water. will float. हाँ yes, आपने उसको पानी के अंदर ऐड किया था. आपके पास क्या बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. This is a different thing, right? और आपने इसको जो है with ऑक्सीजन भी किया था. आपको याद होगा कि इसमें क्या बना था आपके पास? इसमें आपके पास बना था सोडियम ऑक्साइड. यस, इसमें ऑक्साइड्स बने थे, ठीक है. और आपने विद हैलोजन भी किया था जिसमें आपके पास सॉल्ट बने थे, ठीक है ना. तो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1. तो मैं इसमें आपके पास जो है कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब पेपर में सवाल आएगा तो आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Everyone, is that clear? Any problems you can ask? सर ये वाले प्रोसेस नहीं समझ आ रहे कौन से वाले? जिसमें ऐसा कैटालिस्ट यूज होते हैं. बेटा ये तो प्रोसेस अभी हमने पढ़ लेना है, अभी हमने प्रोसेस पढ़ी नहीं. प्रोसेस तो हम आगे पढ़ेंगे. मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया आपको कि ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं. आपको सिर्फ अभी फिलहाल ये याद करना है कि दे यूज एज अ कैटलिस्ट. अब कहाँ होते हैं ये हम आगे सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे. यू नीड टू लर्न हैबर प्रोसेस सेपरेटली, यू नीड टू लर्न कॉन्टैक्ट प्रोसेस सेपरेटली, you need to talk about manufacturing of margarine in organic chemistry, you need to talk about catalytic converter in air and emulsions, right? इधर सर सादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं. नहीं, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन है. कैटालाइटिक कन्वर्टर आप एयर एंड पॉल्यूशन में पढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस आप रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ पढ़ेंगे. ओके सर.
हमने इसमें ये पढ़ा है कि जो उन रिएक्शंस हम करा रहे हैं, उन रिएक्शंस में ट्रांजिशन मेटल्स को ऐड कर रहे हैं तो वो रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, दे आर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, राइट। अभी फिलहाल हमें ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। so this is all about chapter number 12, periodic table. This is syllabus number 8, right? periodic table आपके नए वाले सिलेबस में ये सिलेबस नंबर 8 के तौर पर